Welcome to in-house training program of CBSE. Today's topic is effective communication skills. How can we communicate effectively with another person, to the students? So the process of communicating, the most important process that enable efficient and effective management. Different studies indicate what is particularly important for pursue now to communicate affects their work in the student-teacher relation. It turns out that both are facing with typical problems. The solution of the problem is to change the approach to information management. The existence of the observed differences and similarities between a dynamic communication process is in any organization. This is quite understandable because the process of information flow in a capacity depends on the people who make up this organization, and communication skill as a part of interpersonal competence have a significant impact on the individual's effectiveness. Of various professionals and their fields are full of this effective process to communicate one people to another. The process of communication is a basic for the effective functioning of the every organization. A lack of effective communication constitutes one to the key obstacles to the productive. Each company at same stage of its development deals with the specific problems related to the communication process, and these difficulties are not only associated with the simple to communicate with others way is the most important feature of the person's personal ability. The most essential requirement for the success in professional is the both in written or oral form, and this is the ability to communicate with. There are certain qualities which ensure success in the life with effective communication, and these qualities are applicable to all forms of communication. And there are three qualities of good communication. First is clarity. Clarity means the quality to being expressed clearly. The receiver must understand the meaning of the message exactly as the sender wants to convey. And there should be no scope for any doubt, misunderstanding, and ambiguity. So main objectives
This communicative skill is define and understand the communication and the communication process. List and overcome the filters and barriers in a communication process. Practice active listening and tips to improve verbal and non-verbal communication. तो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तो मेरे द्वारा जो बोला गया वो सेंडिंग द मैसेज, और आपने जो सुना दैट इज रिसीविंग द मैसेज। इसमें क्या हो, सही प्रकार से कब सुन सकते हैं? जब सही उच्चारित हो, मीनिंगफुल उच्चारित हो, मोटिवेट करने वाला उच्चारण हो, या कुछ सीखने की इच्छा हो, तभी कम्युनिकेशन जो है दोनों ओर से हो सकता है। यदि एक और सुनना नहीं चाहता है और आप बोले पर बोले जा रहे हैं, यदि कक्षा कक्ष में शोरगुल हो रहा है और बच्चे सुनना नहीं चाहते हैं, या कक्षा जो है बोझिल हो जाएगी यदि कहने वाला भी इफेक्टिव तरीके से नहीं कर सके अपनी बातों को, तो सुनने वाला भी एक्टिव होना चाहिए और कहने वाला भी एक्टिव होना चाहिए। इसमें क्लियरिटी हो, बोलना स्पष्ट रूप से उच्चारित हो, शब्दों का उच्चारण मीनिंगफुल हो। उसके बाद कम्युनिकेट करने का जो प्रोसेस है वो सही तरीका हो। जितने प्रकार के बैरियर्स हैं, बैरियर्स क्या क्या होंगे, कक्षा कक्ष में जब भी प्रवेश करेंगे कौन कौन से बैरियर्स आएंगे? पहला बैरियर्स है कि बच्चों को कंसंट्रेट करना। बच्चे जब अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लेंगे, इसके लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं कि बच्चा शोरगुल कर रहा है, 2 घंटियों 2 कक्षा के बीच में, 2 कालांश के बीच में जो इंटरवल होता है, उस दौरान ये गैप को कैसे आप काटेंगे? तो कक्षा कक्ष में जैसे ही प्रवेश करेंगे, कुछ एक्टिविटी के द्वारा, कुछ योगा करवाकर, कुछ ओम का उच्चारण करवाकर, ब्रह्मनाद वगैरह करवाकर हम लोग कक्षा को कंसंट्रेट करने का प्रयास। उसके बाद प्रभावी तरीके से विषय वस्तु को रखना ताकि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन हो सके, बच्चे सीख सके। और यह तभी प्रभावी होगा जब उसके लिए पूर्व से आपकी तैयारी, कि आज कक्षा कक्ष में जा रहे हैं और पूर्व से तैयारी नहीं, यदि हम लोग लेसन प्लान नहीं बनाए, उसके लिए प्लानिंग पहले से नहीं किए कि क्या आज बताना है कक्षा कक्ष में, इस कक्षा में क्या बताना है, इसके लिए जरूरी है कि हम लोग उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। टू अचीव दिस गोल द सेंडर मस्ट चूज precise, concrete and familiar words. He or she may plan or even write the communication beforehand. तो कक्षा कक्ष में जाने के पहले अपने हाथ में वो सारी गतिविधियां कॉन्क्रीट वे में सेलेक्ट कर लेना, ताकि हम जो सेंड करेंगे मैसेज, मेरे द्वारा जो बोला जाएगा वो इफेक्टिव कितना होता है कक्षा कक्ष में। He or she is not making a speech to create an impression. His aim is to communicate a message precisely and clearly. The sender should construct short sentences
meaningful sentences, and this should be grammatically correct. Unity and coherence in the formation of the sentence makes the understanding of the message easy. तो इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, मैसेज को सही तरीके से बच्चे के दिमाग में डाल सकेंगे। सेंटेंस छोटा हो, मीनिंगफुल हो, उसमें त्रुटि नहीं हो। ब्रेविटी is the soul of wit, and brevity means the quality of using few words while speaking or writing. Conciseness is the most important virtue for any kind of communication. The message must be communicated in the fewest possible words. If the message can be conveyed in few words, 10 words, 20 words, why should it be conveyed in 15 or 20 words? If the message is not concise, it may create confusion and misunderstanding or ambiguity. It results in the wastage of time of the sender as well as the receiver. While communicating, one should stick to the relevant material. The choice of word is also important, and one should choose simple and short words instead of phrases involving many words. One should also take care not to talk or write about obvious things or things which are already known, and should avoid the repetition of the content. तो वर्ड जो चुने उसमें सिंपलिटी हो, सिंपल मीनिंग में हो, मीनिंगफुल हो। वो 10 वर्ड्स में हो रहा है तो 10 वर्ड्स में हो, 20 वर्ड्स में। ये बैरियर नहीं कि आपको इतने ही वर्ड में बोलना, जितना हो सके संक्षेप में अधिक बातों को समझाना, ताकि बच्चे अच्छी तरह से समझ सकें विषय वस्तुओं को। Completeness. The communication should be complete in all respects. It must be contain all the facts that a receiver wants to know. The sender of the communication should ensure that after receiving the communication or to communicate, the receiver will not need any future further information or clarification. Question arise, what is communication? कम्युनिकेशन आखिर है क्या? कम्युनिकेट करना, जैसे आप और हमारे बीच में अभी बातचीत हो रही है, अभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, हम आपको बता रहे हैं, आप अपनी बातों को रख रहे हैं, तो बोथ वे, एक डायरेक्शन में नहीं होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है यह कम्युनिकेशन। वन वे ट्रैफिक की तरह हो जाए कि हम केवल बताते जा रहे हैं और बच्चे हाँ हाँ मिला रहे हैं, तो वन वे ट्रैफिक हो गया। ऐसी कक्षाएं प्रभावी नहीं मानी जा सकती। तो दोनों ओर में जो दोनों ओर से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो कैसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे? तो कम्युनिकेशन है क्या? इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिशन information, ideas, attitudes from one person to another person. Communication is the process of meaningful interaction among human beings. आपके हमारे बीच, आपके और बच्चों के बीच, आपके और पेरेंट्स के बीच गुड कम्युनिकेशन तभी बन पाएगा जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे,
अब तभी समझेंगे जब आप इफेक्टिव तरीके से उन्हें कम्युनिकेट कर पाएंगे। इट्स एसेंसेस आर पर्सनल प्रोसेस occurs between people, involves change in behavior, means to influence other, and expression of the thoughts and emotions through words and actions. Tools for controlling and motivating people. It is a social and emotional process. Effective communication. If sound is so simple. See what you mean. Sound बहुत ही सिंपल हो, इसका मतलब क्या हुआ? But all two of them, what we try to communicate gets lost in translation, despite our best intention. We say one thing, the other person hears something else, and misunderstandings, frustration, and conflicts ensue. Fortunately, you can learn how to communicate more clearly and effectively. Whether you are trying to improve communication, a skill that enable you effectively connect with others, build trust and respect, and feel heard and understood. And we can understand the feelings of the other. Communication is about more than just exchanging information. It is about understanding the emotion and intentions behind the information. Effective communication is also a two-way street. It is not only how you convey a message so that it is received and understood by someone is exactly the way you intended. It is also how to listen to gain the full meaning of words being said and to make the other person feel heard. What are the most common ways we communicate? First is spoken word, written word, visual image and body language. पहला है कि हम लोग जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं वो कैसा हो, वो सिंपल हो, उसमें मीनिंग हो, उसमें एक दूसरे से को रिलेट किया हो और उसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं हो। उसके रिटन वर्ड्स जो हम लोग वर्ड बोर्ड पर लिखें, बोर्ड वर्क करते हैं, उसमें अशुद्धियां न हो, सेंटेंसेस छोटा हो, कोई जरूरी नहीं उसमें 10 वर्ड्स हैं या 20 वर्ड्स हैं, 15 वर्ड्स हैं, यह मैटर नहीं। मैटर क्या है? उसमें शुद्धता कितनी है, वो मीनिंगफुल कितना है, कंटेंट से वो टैली कर रहा है अथवा नहीं। विजुअल इमेजेस जो हम लोग इमेज दिखाते हैं प्रोजेक्टर वगैरह से, उसमें अपनी बातों को कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है। आप जब सामने होते हैं तो बच्चे भी आपको देखते हैं, तो आई टू आई कांटेक्ट होता है, दिस इज विजुअल कांटेक्ट आल्सो। उसके बाद आप किस प्रकार से खड़े होते हैं, बच्चे आपके सामने कैसे खड़े होते हैं। बच्चे आपके सामने आए और मान लीजिए पॉकेट में हाथ डाले हुए, मान लीजिए कमर में हाथ डाले हुए, इसका मतलब क्या हो गया? उन्हें खड़ा होना नहीं आता, मैनर नहीं सीखे, अच्छे तरीके को नहीं सीखे, तो उन्हें बताना कि कहीं भी खड़ा होना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है,
खाने के लिए दिए, पहले क्या खाना है, पहले कैसे हाथ धोना है, फिर खाने की वस्तुओं को टच करना है। ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रमुख लक्षण है। अब हम एक वीडियो को वीडियो देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रभावी बना सकते हैं, पर कम्युनिकेशन को हम लोग प्रभावी कैसे बना सकते हैं। इसलिए उस वीडियो को अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हाउ वी मेक और कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कि किस प्रकार वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। इसलिए हम लोग देख के भी सीखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में सीखते हैं। Hello everyone, my name is Clara, and today we'll have a quick discussion on why is tone important. Let's learn why our tone of voice is important to think about when talking to another person. Imagine your mother telling you, go to your room. Hearing her say this with that strict tone means she is serious, upset, and that she doesn't want to hear any explanations from you. Understanding someone's tone is a time saver. Imagine if she needed to explain what she was feeling at that moment without using tone. It'll take her extra minutes to do so. Visualize a world full of people explaining everything without using tone. It will take a lot of time and it will get very tiring. Allow me to show you another example. Let's have one person named Rachel say the same thing but with different tones. I'm fine. How are you? Did she sound happy, sad, or irritated? The answer is happy. Take two, Rachel. I'm fine. How are you? Did she sound happy, sad, or irritated? The answer is sad. Take three, Rachel. I'm fine. How are you? Did she sound happy, sad, or irritated? The answer is irritated. Picture Rachel saying the same thing but without the proper tone matching her emotion. We wouldn't be able to understand what is she really feeling. As you can hear, tone is very important. It helps us understand the emotion and intention of the people that we talk to. It's essential that we watch our tone because it affects the people around us. Remember, it's not what you say, but how you say it. Your tone of voice needs to match your message in order to build great communication with others. Till next time, this is Clara, class dismissed. Alice works at a local department store. She spends most of her day interacting with customers and coworkers. There's a lot of talking involved, but there's also another form of nonverbal communication that's being used just as often. Body language. Body language is the process of communicating through nonverbal signals. It includes things like our posture, facial expressions, gestures, and more. The meanings of these all vary from culture to culture, but we instinctively read body language and interpret it as some expression of moods, feelings, or intentions. So, in Alice's case, even before she speaks, she may be communicating all kinds of things to customers. For example, if her arms are crossed and she's avoiding eye contact, customers may not find her to be very approachable. However, Alice could be in a friendly mood, even though her body language suggests otherwise. And this isn't necessarily a conscious choice that she's made. This could just be how she habitually presents herself. But if Alice is aware of these habits, she can work on improving her body language. Changing your habits can be difficult, but if you take time to pause,
and check in with yourself, you can start to notice them and adjust things to become a better nonverbal communicator. This awareness can also be applied to reading others' body language. Let's say Alice notices that her coworker is unusually quiet, has his body turned away from her, and is slouched over. She may pick up that he's upset, or that there's an unspoken issue at hand. Depending on Alice's relationship with him, she may want to give him some space or ask if anything's wrong. Being aware of the various aspects of body language can make all the difference in how people perceive you and how you perceive them. Be aware of how you present yourself, and you can say a lot without speaking. GCF Global, creating opportunities for a better life. Hi, this is Nasreen. Today we're going to have a conversation about why your pitch and tone of voice matters when you're having a conversation with other people. I'm going to show you 3 separate people who are going to say the same sentence using different tones of voices. You'll have to listen carefully. See if you can hear the difference. Are you ready? Last night, Mom left the lasagna in the oven a little too long, and let's just say, well, it wasn't edible. So they piled into the car and set off trying to find something to eat. When Mom asked, "What are you in the mood for?" Brian replied, "I don't care." When Mom asked him, Dad replied, "I don't care." So Brian asked Mom, "What do you want?" "I don't care." So what do you think? Did you hear the difference? All 3 people said, "I don't care." But one was angry, one was excited, and one was simply busy. Creative using Powtoon. हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार कम्युनिकेशन में वर्ड का यूज इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। कक्षा कक्ष में जाएं तो संबोधन, पहला संबोधन जो आप करते हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, इस चीज को ध्यान में रखना। यदि किसी पेरेंट्स से भेंट करने जा रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं, उसका कुछ रिजल्ट्स निकलेगा अथवा नहीं, इस चीज पर ध्यान रखना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके 1-to-1 रिलेशन को प्रभावी बनाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरह के कम्युनिकेशन हो सकते हैं? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जब एक लेवल से दूसरे लेवल तक कम्युनिकेशन जो मैसेजिंग होता है, दैट इज ऑन डायरेक्टिव वे एंड हाईली डायरेक्टिव। डिफरेंट अपर लेवल टू लोअर लेवल में जो मैसेज का सेंडिंग होता है वो डायरेक्टिव वे में होता है, फ्रॉम सीनियर टू सबऑर्डिनेट टू असाइन ड्यूटीज एंड गिव इंस्ट्रक्शंस, to inform, to offer feedback and approval of highlight problems etc. जब बड़े प्राधिकारी अपने से मातहत कर्मियों को विभिन्न दिशा निर्देश देते हैं तो वह डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में आता है। वो अपने अधीनस्थ कर्मियों को अपने निचले स्तर पर गाइडलाइंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो इसी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एक भाग है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, इट इज नॉन डायरेक्टिव इन नेचर, फ्रॉम डाउन बिलो टू गिव फीडबैक, टू इन्फॉर्म अबाउट प्रोग्रेस, प्रॉब्लम, सीकिंग अप्रूवल।
डिफरेंट अप्रूवल के बारे में, डिफरेंट इम्प्रूवमेंट के बारे में कि प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, इसके बारे में फीडबैक जब लिया जाता है तो अधीनस्थ कर्मी अपने अपने क्षेत्रों के बारे में किए गए कामों की चर्चा करते हैं। तो यह अपवार्ड कम्युनिकेशन, जैसे कक्षा कक्ष में हम जिन बातों को बच्चों को बताते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, कंटेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, यह आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। और जब कोई प्रश्न पूछते हैं और बच्चे जब उसका जवाब देते हैं, वो क्या हो गया? अपवार्ड कम्युनिकेशन। लेटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एमंग colleagues, peers at same level for information level for information, sharing for coordination and it to save the time। जब अपने लेवल पर बातचीत होती है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ में चर्चा करते हैं और अपनी बातों को वो बताते हैं, अपने कामों के बारे में बताते हैं या दूसरे को मदद करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और लेटरल कम्युनिकेशन में आता है। इन मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट कम्युनिकेशन extend beyond written or spoken words to listen word visual dimension aided by TV computers has given new meaning to communication। Communication network, formal network, this is virtually vertical edge per chain to command within the hatchet, informal free to move in any direction may skip formal chain of command, likely to satisfy social and emotional needs and also can facilitate task accomplishment। HTT level of communication, first is in one system there is executive level to lower level, this is downward communication, to vice president to AGM to manager to supervisor to foreman, and upward is from foreman to supervisor to manager to AGM to vice president to the director। There are different type of communication। Manager give instructions to the worker, different workers and same message are sent to the different worker, this is horizontal communication। If you instruct all students to write one page handwriting, one paragraph on your copy notebook, then this is the instruction for all the students of your classroom। So this is horizontal communication। The communication process, there are some medium, sender and receiver, and between sender and receiver there are different barriers. Different barriers means there are some noise in the classroom, inappropriate medium, assumption, misconception, emotion, language differences, poor listening skills and distractions। यदि क्लास में नॉइज हो रहा है और आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं
तो ये पॉसिबल नहीं है कि कम्युनिकेट करेंगे आप बच्चे से कैसे। यदि नॉइज हो रहा है तो पहले नॉइज को कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करेंगे? ये आपके शिक्षण कौशल पर निर्भर करेगा कि आप अपनी कौशलता को दिखाते हुए, उन्हें कंट्रोल करते हुए अपनी बातों को रख सकें, कंटेंट के बारे में चर्चा कर सकें। इन एप्रोप्रिएट मीडियम, कुछ बच्चे कक्षा कक्ष में खेल रहे हैं, कुछ बच्चे अलग अलग एक्टिविटी, जैसे कुछ टिफिन खा रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, तो इस ढंग से उन तक आपकी बातें नहीं पहुंच पाएगी। उनका ध्यान अलग कामों में है। कुछ बच्चे अदर सब्जेक्ट्स, आपके सब्जेक्ट को हल्के में ले रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मिसकंसेप्शन, आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है, बच्चे का यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इमोशंस, बच्चे के मध्य जो इमोशंस होंगे उससे भी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज डिफरेंसेस, यदि बच्चे अलग भाषाभाषी हैं और आप उन्हें अलग भाषा में समझा रहे हैं, तो अच्छे ढंग से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी लैंग्वेज के बैरियर्स को हटाया गया है कि आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दें। यदि बच्चे, क्योंकि अभी सभी क्षेत्रों में सभी भाषाभाषी छात्र सभी विद्यालयों में हैं, इसीलिए मल्टीलिंगुअल, बहुभाषी होना पड़ेगा। प्रत्येक शिक्षक को अपने भाषा के अलावे एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एक अंतर्राज्यीय भाषा से अवगत होना होगा। यदि कोई तमिल तेलुगु भाषाभाषी है तो उसके लिए तमिल तेलुगु में बातचीत करना होगा, तब वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। यदि कोई बांग्ला भाषी है, बांग्ला में बातचीत करना होगा। यदि कोई संथाली भाषा का है तो संथाली भाषा में बातचीत करना होगा। यदि कोई उड़िया है, उड़िया में बातचीत करना होगा। भोजपुरी भाषी से भोजपुरी कि का समाचार बा। यदि बेंगली भाषी हैं, केमन आछो, माँ केमन, बाबा केमन, सब भालो अच्छे, तो इससे क्या होगा जब आप उसके विषय में पूछेंगे। यदि संथाली भाषी हैं, उनको कहेंगे, जोहार करेंगे। उसके बाद उसके माँ पिताजी के बारे में बाबाई तुम, गोगोई तुम, बड़ावकारे नहीं, तो वो आपसे ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। यदि तमिल तेलुगु भाषाभाषी हैं, उनसे तमिल तेलुगु में बातचीत करें, वैसे शब्दों का व्यवहार करें। यदि केरल के हैं, मलयालम भाषा का वलक्कम, तो वो आपके ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। फिर वो अपनी बातें आपसे शेयर कर पाएंगे अपनी भाषा में ही। तो इस प्रकार बहुभाषी होना होगा, मल्टीलिंगुअल होना होगा प्रत्येक शिक्षक को। क्योंकि सीबीएसई का ये गाइडलाइन है, प्रत्येक शिक्षक को वो भाषा सीखना ही है। जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा से अवगत होना होगा। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस कम्युनिकेशन का प्रमुख बैरियर होता है क्लास में। छोटे बच्चे अपने घर में जो बातचीत करते हैं, तो बातचीत के क्रम में वो अपनी बातों को आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में हैं।
आपकी भाषा वहाँ इंग्लिश मीडियम है। एक हम लोग देखें वीडियो, इस पर रिलेटेड वीडियो है। Welcome to another Art School video. Today's lesson is all about visual communication. Let's get started. In order to understand visual communication, we must first learn what it means to communicate. Communication is about transmitting information. The communication process usually begins with a sender trying to send or transmit information in the form of a message to an audience or a receiver, who would in turn interpret the message and possibly send feedback. Visual communication is one of the four main types of communication. The first is verbal communication, where someone would say the word stop. The second is non-verbal communication. This is all about body language and gestures. A person might signal to you to stop instead of actually saying the word stop. The third is written communication. In this case, someone may write an instruction for you to stop. And the fourth is visual communication. Visual communication is all about transmitting information using imagery. This is when pictures, images, symbols, signs, and other graphic designs are used to communicate information to others. For example, instead of writing the word caution or be careful, someone might use this symbol that lets the audience or the receiver know that something is dangerous, especially when there is no one around to say or direct persons away from the danger. But why is visual communication important? Firstly, it increases retention. People remember more of what they see compared to what they hear and read. Secondly, visual communications are universally understood. Have you ever gone to a foreign country and needed more information on where to go or how to behave? Visual communication helps us to simplify complicated messages in a way that enables anyone to understand, regardless of their language and age. This is why maps and street signs come in so handy when visiting a foreign country. Pie charts and bar graphs are other ways in which visual communication is used to simplify complicated or lengthy info. When information is presented this way, it paints a clearer picture. The viewer can easily notice the relationships, patterns, and trends in the data collected. Thirdly, they are easily recognizable. Companies create logos that are eye-catching and memorable, so that persons can easily recognize them wherever they are. Fourth, they are more impactful. Visual communication allows us to make information more engaging by adding color and special details, attracting more people to want to see it. And lastly, visual communication helps us get straight to the point. In a dangerous situation, a driver will be able to see and understand this landslide or falling rock sign much faster than reading about it. The color red means love and anger, but it can also mean caution or danger. So combining this red triangle with an image of rocks falling is a simple and effective way of communicating the danger ahead in a split second. All in all, visual communication is important because it helps us remember more information. They are eye-catching and help make things more interesting. Complicated or lengthy info can be simplified and easily understood. Visual communications also help us communicate with persons of different languages and ages.
and they are straight to the point and can help save time and lives. But that wraps up our lesson on visual communication. As always, I hope you learned something new. Thank you for watching. Let me know what topic I should cover next. Follow me on social media and like, comment, and subscribe for more art content. Next is poor listening skill. यदि बच्चे में सुनने की क्षमता कम हो, हम जो बता रहे हैं पिछली बैच तक यदि नहीं पहुंचता है तो ऐसे बच्चे नहीं सुन पाते। यदि हमारा साउंड लेवल लो है तो भी बच्चे नहीं सुन पाते। दो तरह की बातें होती है, या तो बच्चे की श्रवण क्षमता कम है या फिर हमारे बोलने का जो वॉइस है वो इफेक्टिव नहीं है कि पिछली बैच तक वो पहुंच सके। तभी बच्चे के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उन बच्चों के साथ जिनमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कैसे सुधारें? यदि ऐसे बच्चे कक्ष में हैं तो उन्हें अग्रिम पंक्ति पर बैठाने की व्यवस्था हो ताकि वो बच्चे सुन सकें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकें, क्या समझे, क्या सीखे, इसको व्यक्त कर सकें, आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें। डिस्ट्रैक्शंस, यदि बीच में कोई बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है, कोई और प्रश्न पूछ देता है तो कक्षा में बाधा पहुंचती है। जो आप कम्युनिकेट कर रहे थे बीच में यह प्रक्रिया जो होता है भंग हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, स्ट्रेस एंड आउट ऑफ कंट्रोल इमोशन, लैक ऑफ फोकस, मल्टीटास्किंग, डे ड्रीम, इनकंसिस्टेंट बॉडी लैंग्वेज, ये सभी बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के कि हम लोग जब बच्चों के साथ कक्षा में क्लास में कम्युनिकेट करते हैं तो दो तरह की बातें होती है। बच्चे क्या होते हैं, सुनते हैं बातों को, दे आर हियरिंग एंड लिसनिंग। Hearing, what is hearing? Hearing is only physical process, natural process, and it is passive. But listening, physical as well as mental process. This is active, learned process, and it is a skill. Listening is hard, and you must choose to participate in the process of listening, कि हम लोग अच्छे से सुनना सीखें। अच्छे जो श्रोता होते हैं वो अच्छे वक्ता भी होते हैं। जब हम अच्छे से सुन नहीं पाते तो अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे। इसलिए ये स्किल को सुधारना कि अच्छे से सुनने की आदत। वैल्यू ऑफ लिसनिंग, listening to others is an elegant art. Good listening affects curiosity and courtesy and good manners. Listening carefully to the instruction of superiors improve competence and performance of one another. The result of poor listening skill could be distress in business, employment, and social relations. Good listening can eliminate a number of imaginary grievances of employee. Good listening skill can improve social relations and conversation. Listening is a positive activity rather than the passive or negative activity.
जब लोग सुनते हैं तो वह पॉजिटिव वे में सुनना एक अच्छी आदत को जन्म देता है और उस व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसके आइडिया को, उसके फीलिंग्स को हम लोग समझ पाते हैं। एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन वी मस्ट डू फॉर गुड कम्युनिकेशन। फॉर दिस ऑलवेज थिंक अहेड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू से। पहले ये समझना कि हमको कहना क्या है, कौन सी बातें बतानी है, कैसे बतानी है। यूज सिंपल वर्ड्स और फ्रेज दैट आर अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी। इंक्रीज योर नॉलेज इन ऑल सब्जेक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक। वैसे सब्जेक्ट में जिसमें आपको बताना है उसमें अपने नॉलेज के स्तर को बढ़ाना, क्योंकि कुछ बच्चे कक्षा में तेज भी होंगे, वो अलग तरह से प्रश्न पूछ देंगे, तो उस समय यदि आप जवाब नहीं देते हैं तो मन में ये बातें घर कर जाएगी आपकी कि बच्चा पूछा जवाब नहीं दे पाए, आत्मग्लानि महसूस होगी। सो इंक्रीज योर नॉलेज ऑन ऑल सब्जेक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू स्पीक क्लियरली एंड ऑडिबली। जो ऐसे आवाज में बोलना जो सुनाई दे सके। यदि कक्षा बड़ी हो, कक्षा कक्ष बड़ा हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो। अभी तो सीबीएसई ने एक कक्षा कक्ष में 40 स्टूडेंट्स की बात कही है और इसीलिए कक्षा की क्षमता 40 से ज्यादा नहीं, तब कक्ष की क्षमता जब 40 होगी तो ऑडिबल होगा। यदि ऑडिबल नहीं है, बड़ी सी कक्षा है, उसमें भी बच्चे बैठे हुए हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिवाइस का यूज करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और चेक ट्वाइस विद द लिसनर वेदर यू हैव बीन अंडरस्टूड एक्यूरेटली और नॉट। In case of interruption, always do a little recap of what has been already said. कि जांचना कि आपने जो बताया है उससे बच्चे ने समझा अथवा नहीं समझा है, सुना है अथवा नहीं सुना है। तो पीछे से बच्चे को उठाना, बताओ मैंने क्या कौन सी बातें बताई अभी। यदि वो बच्चा सो रहा है तो बच्चा क्या कहेगा, आपकी बातों को नहीं डिलीवर कर पाएगा, बैक नहीं कर पाएगा। जो बच्चा दूसरे कामों में व्यस्त है वो बच्चा भी आपकी बातों को फिर से नहीं बता पाएगा। तो इस समझ में आ जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं हुआ। ऑलवेज बी इंडिविजुअल। देखिए हम एक और वीडियो कि हमारा कम्युनिकेशन जो है, इन केस ऑफ इंटरप्शन ऑलवेज डू ए लिटिल रिकैप ऑफ व्हाट हैज बीन ऑलरेडी सेड। ऑलवेज पे अनडिवाइडेड अटेंशन टू द स्पीकर व्हाइल लिसनिंग एंड व्हाइल लिसनिंग ऑलवेज मेक नोट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कि अपने पास छोटी सी डायरी रखनी है, जो इंपॉर्टेंट बातें हो उसको नोट करना, क्योंकि समय पर ये काम देगा कि जब पूछा जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा, उससे हेडलाइंस को आप बता पाएंगे, मेन पॉइंट्स को बता पाएंगे। इसलिए एक छोटी सी डायरी को रखना। क्लास में भी बच्चों को बताना कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसे नोट कर लें कम से कम। ऑलवेज आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन if you have failed to grasp other's point or view. Repeat what the speaker had said to check whether you have understood accurately. Essential for essential communication. Don't instantly react or murmur.
something in anger, कि गुस्से में कोई बात नहीं करना। कोई बच्चा प्रश्न पूछ दे तो गुस्सा करके जवाब नहीं देना कि तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, कुछ ऐसी शब्दों का व्यवहार नहीं करना। डोंट यूज टेक्निकल टर्म और टर्मिनोलॉजी not understood by majority of people. Do not speak too fast or too slow. बहुत तेजी से नहीं बोलना, बहुत ही स्लो भी नहीं बोलना। Don't speak in inaudible surroundings as you want to be heard. इस प्रकार से भी नहीं बोलना कि अगले को सुनाई भी न दे। Do not assume that everybody understand you. ये कभी भी समझना नहीं कि प्रत्येक ने आपकी बातों को समझ लिया है। While listening, do not glance here and there, as it might distract the speaker. Do not interrupt the speaker. जो बोलने वाले हैं उनको इंटरप्ट नहीं, बीच में टोका टोकी नहीं करना। और जब टोका टोकी करेंगे तो वो लयबद्धता खंडित हो जाएगी। डोंट जंप द कंक्लूजन दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। हाउ टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे हम लोग इंप्रूव करेंगे अपने कम्युनिकेशन लेवल को। इंप्रूव लैंग्वेज, जितने भी लैंग्वेज के टीचर हैं अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करना। इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन को कैसे सुधारा जाए कि शब्द जो है जो यूज कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, उसका सही सही उच्चारण हो, जो पिछली पंक्ति तक को स्पष्ट सुनाई भी दे। वर्क ऑन वॉइस मॉड्यूलेशन, वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज। जब आप खड़े हो बोलने के लिए कक्षा कक्ष में तो आपका बॉडी लैंग्वेज भी उसी के अनुरूप हो। यह नहीं कि झुक के खड़ा हो, एक ही जगह पर खड़े होकर नहीं करना अपनी बातों को, कि आपका मूवमेंट हो क्लास में। एक जगह पर जब खड़े होकर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, वन वे ट्रैफिक की तरह हो जाएगा कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है, इस बातों की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसीलिए बीच बीच में जांच भी करना, इसके लिए क्लास में मूवमेंट जरूरी है। रीड मोर एंड लिसन मोर। जब हम लोग अधिक पढ़ेंगे कि कल क्या डिलीवर करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, इसके लिए वेल प्लान करेंगे तो हम लोग अपनी बातों को अच्छे से कक्षा कक्ष में रख सकेंगे। इंटरेक्ट विथ क्वालिटेटिव पीपल एंड इंप्रूव ऑन यू टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कि जिस टॉपिक पर डिस्कशन करना है उस टॉपिक को इंप्रूव करना। थिंक एंड स्पीक, पहले सोचना और फिर कहना कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बारे में पहले सोच लेना फिर कहना है। डोंट स्पीक टू फास्ट, बहुत ही फास्टली नहीं कह के जाना कि ऊपर से पार हो जाए, जो कह रहे हैं बच्चे समझ नहीं पाए। एंड स्लो भी नहीं कहना कि ऑडिबल हो, पिछली पंक्ति तक को वो स्पष्ट सुनाई दे। डोंट स्पीक ओनली टू इम्प्रेस समवन, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कि ऐसे लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगला इंप्रेशन बनेगा, ऐसा सोच करके नहीं। कक्षा कक्ष में कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि उससे हिल मिलकर बातचीत करें, बच्चे के लैंग्वेज में बातचीत करें। हाउ डू यू बिकम एन एंगेज लिसनर, हम लोग अच्छे लिसनर भी बने। फोकस फुल्ली ऑन द स्पीकर एंड फेवर योर राइट ईयर। अवॉइड इंटरप्टिंग और trying to redirect the conversation and show your interest in what is being said and try to set aside
जजमेंट्स। तो इन बातों को ध्यान में रखना ताकि हमारा कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव हो सके। इंप्रूविंग बॉडी लैंग्वेज टिप्स, बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करेंगे कि कीप एप्रोप्रिएट डिस्टेंस एंड टच ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट एंड टेक केयर ऑफ योर appearance and be aware. People may give false cues and maintain eye contact. सीधे तौर पर आई कांटेक्ट के साथ बातचीत करना, स्माइल जेन्युइनली। ये हम लोग ये नहीं कि पूरा हंसते हैं, बच्चे जैसे खिलखिला कर हंस रहे हैं हम भी हंस दिए, ऐसा नहीं करना है। तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद।